Hello students, welcome to the 8th video trigonometry class. Before starting, first we start Brahmanad. Om. शांति शांति शांति. Susto. Today we are going to discuss multiple and submultiple angles. Last class we discussed compound angle and its formula, that is sin A plus B, cos A plus B, tan A plus B, etc. And also find the value sin 15 degree, cos 15 degree, okay, tan 15 degree, etc. But today we will discuss multiple and submultiple angle. So what are the multiple angles? Multiple angle. Let capital A be an angle, then angle 2A, then angle 2A, comma 3A, 4A, etc. are called multiple angle of capital A. Okay, so what are the formula of multiple angle of a trigonometrical ratio? Number 1, sin 2A. You know sin 2A equal to sin A plus A. Using the compound angle for sin of A plus B, this is equal to sin A into cos B. Here B is equal to A plus cos A into sin B. But B is equal to here A. So this is equal to sin A into cos A plus cos A into sin A, and this is equal to 2 sin A into cos A. So sin 2A equal to 2 sin A into cos A. This is the multiple angle formula of sin 2A. Number 2, cos 2A. So cos 2A means you have to write cos A plus A using formula cos A plus B. So this is equal to cos A into cos B minus sin A into sin B. So here B is equal to A. This is equal to cos square A minus sin square A. So cos 2A equal to cos square A minus sin square A, or this is equal to cos square A minus sin square A means you have to write 1 minus cos square A. So this is equal to cos square A minus plus cos square A. This is the 2 cos square A minus 1, or cos square A is equal to 1 minus sin square A minus sin square A, and this is equal to 1 minus 2 sin square A. Therefore cos 2A we get 3 formula. One is cos square A minus sin square A, or 2 cos square A minus 1, or 1 minus 2 sin square A. These are all are the formula of multiple angle cos 2A. Okay, next tan 2A. Number 3, tan 2A. Here also you have to write 2A is equal to A plus A. So this is equal to tan of A plus A. Use the formula tan of A plus B. Tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B. But B is equal to A. Here B is equal to A.
So this is equal to 10a plus 10a equal to 2 10a. This is equal to 2 10a by 1 minus 10 square a. So 10 2a equal to 2 10a by 1 minus 10 square a. And the fourth one is cot 2a. Similarly, you have to write cot 2a is equal to cot a plus a using formula cot a plus b. Cot a into cot b, but b is equal to a minus 1 by cot b plus cot a. This is equal to cot a plus cot a. So this is equal to cot square a minus 1 by 2 cot a. So this is equal to cot 2a is equal to cot 2a equal to cot square a minus 1 by 2 cot a. Tan 2a equal to 2 tan a by 1 minus 10 square a. And sin 2a equal to 2 sin into cos a. Cos 2a equal to cos square a minus sin square a, or 2 cos square a minus 1, or 1 minus 2 sin square a. Okay, so these are all are multiple angle formula. Okay, next we express sin 2a and cos 2a in terms of tan a. We know sin 2a equal to 2 sin a into cos a, and cos 2a equal to cos square a minus sin square a. Sin 2a equal to 2 sin a into cos a. एटी किसी ना बेले 1 अच्छी डिनोमिनेटर रे, जेहेतु आपको आम 10 रे कन्वर्ट करिया पड़ियो, तेणु मु कौन करी cos स्क्वायर रे डिवाइड कर देबी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो डिवाइड cos स्क्वायर जेहेतु आमको 10 रे कन्वर्ट करिया पड़ियो, तो दिस इज इक्वल टू 2 sin a into cos a by cos square a whole by 1 by cos square a. तो ये cos a को cos square गोटे कैंसल है. So this is equal to 2 sin a by cos a. तो 2 tan a by sec square a. You know sec square theta minus tan square theta equal to 1. तो sec square a is equal to 1 plus tan square a. So this is equal to 2 tan a by 1 plus tan square a. This is the another formula of sin 2a in terms of tan a. Therefore sin 2a is equal to, this is a very important formula in terms of tan a by 1 plus tan square a. Next cos 2a. So cos 2a is equal to, similarly you have to write cos square a minus sin square a. डिनोमिनेटर किसी ना मैंने 1 अच्छी, एडी आम कौन करिया डिवाइड cos स्क्वायर a. तो cos स्क्वायर a डिवाइड कर देले cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a whole by 1 by cos स्क्वायर a. So this is equal to cos स्क्वायर a by cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a whole by 1 by cos square a equal to sec square a, and this is equal to cos square a by cos square a cancel. So this is equal to 1 minus tan square a by sec square a is equal to, in term of tan, 1 plus tan square a. So this is equal to cos 2a equal to 1 minus tan square a by 1 plus tan square a. This is the formula of cos 2a in terms of tan a. Okay. So sin 2a रो tan तारी फॉर्मूला होला 2 tan a by 1 plus tan square a. मन रखो पिले cos 2a रो tan तारी फॉर्मूला होला 1 minus tan square a by 1 plus tan square a. Next we go to 3a. 3a first sin 3a. You know sin 3a is equal to a plus 2a. 3a टाको आमे केमदी लिखिया a plus 2a लिखिबा. अच्छा, using the formula sin of a plus b, this is the sin a into cos b plus
cos A into sin B, B माने 2A. ओके सो दिस इज इक्वल टू sin A. ये cos 2A रो हमरो तीनटा फार्मूला देखले, चारटा फार्मूला देखले. cos 2A रो 10 तारी फार्मूला देखले, cos 2A रो cos sin बोथ साइड देखले, cos 2A रो sin थारी फार्मूला देखले, cos 2A रो cos थारी फार्मूला पकेले. जेतु एडी हमें sin 3A रो फार्मूला डेरिवेशन करबा, हमें cos 2A रो sin थारी फार्मूला लिखिबा. अच्छा cos 2A रो sin थारी फार्मूला कोन कहलो ना 1 minus 2 sin square A. तो दिस इज इक्वल टू 1 minus 2 sin square A प्लस cos A और sin 2A माने कोन ना दिस इज इक्वल टू 2 sin A into cos A. सो दिस इज इक्वल टू एडा मल्टीप्लाई करले कोन होची दिस इज इक्वल टू sin A minus 2 sin QA plus 2 sin A into cos A into cos A होची cos square A. cos टा को फिर sin रे कन्वर्ट कर दियो. दिस इज इक्वल टू sin A minus 2 sin QA plus 2 sin A into 1 minus sin square A. So this is equal to sin A minus 2 sin QA plus 2 sin A minus 2 sin QA. तो मल्टीप्लाई कर देले नहीं कि. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट हैपन. सो sin A plus sin A plus 2 sin A, this is equal to 3 sin A minus 2 sin QA minus 2 sin QA. So this is equal to 4 sin QA. Therefore sin 3A, we get sin 3A is equal to 3 sin A minus 4 sin QA. This is the formula of sin 3A. Similarly, we have to calculate cos 3A. तेणु sin 3A टा जिन आम डेरिवेशन कले cos 3A टा मध्य सेमती तमे डेरिवेशन करि पारियो केले ना cos 3A टा को A plus 2A लिखिबो. A plus 2A लिखिरे फार्मूला पके देबो cos A plus B रो नहीं कि. तो सेम स्टाइल ने प्रोसेस रे यूज करले कोन आसियो एटा हमें सिमिलरली डायरेक्ट लिखि दोची. Similarly we get cos 3A is equal to 4 cos QA minus 3 cos A. Okay. Next we calculate tan 3A. Tan 3A. So tan 3A टा केमते लिखियो तो tan of A plus 2A लिखिबो using the formula for tan of A plus B. So this is equal to tan A plus tan B. B is equal to A by 1 minus tan A into tan B. So B is equal to 2A. Okay. Next use tan 2A. Tan 2A formula पकबिले एटा होची tan A. Tan 2A कोन ना 2 tan A by 1 minus tan square A by 1 minus tan A 2 tan 2A 2 tan A by 1 minus tan square A. ओके. तो या को हमें सिंपलीफाई करबा. तो सिंपलीफाई कले एडी न्यूमरेटर एलसीएम आसी 1 minus tan square A, डिनोमिनेटर एलसीएम आसीओ 1 minus tan square A. 1 minus tan square को 1 minus tan square कैंसिल हेगला. कैंसिल हैला पर मु फाइनल लिखि दोची दिस इज इक्वल टू tan A into 1 minus tan square A plus 2 tan A by okay 1 minus tan square A 1 वेटा मल्टीप्लाई हो 1 minus tan square A बा 1 into 1 minus tan square A minus 2 tan A into tan A. This is equal to 2 tan square A. तो एटा को मल्टीप्लाई कर दियो. दिस इज इक्वल टू tan A minus tan QA plus 2 tan A by 1 minus tan square A minus 2 tan square A. So this is equal to tan A plus tan A plus 2 tan A 3 tan A minus tan QA by 1 minus 3 tan square A. This is equal to tan 3A. So tan 3A is equal to tan 3A equal to 3 tan A minus tan QA by 1 minus 3 tan square A. Okay. So this is equal to tan 3A equal to 3 tan A minus tan QA whole by
1 minus 3 tan square a. This is equal to 1 minus 1 minus एपटे देखा नुथबो. This is equal to 1 minus 3 tan square a. Okay. Similarly, we calculate cot 3a. तेणु cot 3a टा मध्य तुम एमदी फॉर्मूला यूज करी a plus 2a पकईरी डेरिवेशन करि परियो बेले आमे डायरेक्ट मु लिखि दूची cot 3a टा. ओके. So this is equal to cot 3a equal to cot 3a equal to cot qa minus cot qa minus 3 cot a by 3 cot square a minus 1. This is the cot 3a. So cot 3 equal to cot qa minus 3 cot a by 3 cot square a minus 1. Tan 3 equal to 3 tan a minus tan qa by 1 minus 3 tan square a. Okay. So these are all are multiple angle. All are multiple angle. Okay. Next we find some multiple angle. Next we go to sub multiple angle. So what are the sub multiple angle? Let theta be an angle, then theta by 2, comma theta by 3, comma theta by 4, etc. are called sub multiple angle of theta. So what are the sub multiple angle of theta? That is theta by 2, theta by 3, theta by 4, etc. These are the sub multiple angle of theta. So what are the sub multiple angle formula? Number 1 sin theta. तब sin theta को हमें sub multiple angle convert करिया. We can express sin of 2 into theta by 2, or you can write also sin 3 into theta by 3. Okay. So if we express theta is equal to 2 into theta by 2, then what happen? This is of the form sin 2a, and you know sin 2a equal to 2 sin a into cos a, but here a is equal to theta by 2, so this is equal to 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. So sin theta, if we ask what is the formula of sin theta in terms of theta by 2, sin theta ro theta by 2 style formula la kono? Sin theta ro theta by 2 style la kono? This is the 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. Okay. So this is known as sin theta. Next, और आपको हमें जब tan लिखी दे परिया sin 2a, sin 2a रे tan थारी फॉर्मूला कौन? 2 tan a by 1 minus tan square a, but here a is equal to theta by 2, so this is equal to 2 tan theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2, because sin 2a is equal to 2 tan a by 1 plus tan square a. Okay. Next cos theta. तो cos theta को हम केम लिखि परिया? Cos 2 into theta by 2 so multiple angle रे. So this is equal to cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 using formula cos 2a cos square a minus sin square a, or 2 cos square a. A means theta by 2, 2 cos square a minus 1, or 1 minus 2 sin square theta by 2, और 10 थे लिख ले कौन होची 1 minus tan square theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2. Okay. तो cos theta रसला कौन? cos square theta by 2 minus sin square theta by 2, और 2 cos square theta by 2 minus 1, और 1 minus 2 sin square theta by 2. So in that formula we will get another new formula from cos. Okay. So what is the new formula? Cos theta equal to, okay,
cos theta is equal to 2 cos square theta by 2 minus 1. Cos theta by 2, cos theta equal to 2 cos square theta by 2 minus 1. That implies minus 1 type 2 ano. So 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2. So 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2, or cos square theta by 2 is equal to 1 plus cos theta by 2. Cos square theta by 2 equal to 1 plus cos theta by 2. देखो पहले थीटा by 2 अच्छी माने थीटा हला तार डबल हला cos square theta by 2 टा 1 plus cos theta by 2 हम एडी मनगर cos square theta थांदा बोले 1 plus cos 2 theta by 2 हम थीटा by 2 टा थीटा होची थीटा टा 2 थीटा हम 2 थीटा टा 4 थीटा हम. Similarly, cos theta is equal to 1 minus 2 sin square theta by 2. एड एपटू आसीबो. So this is equal to कौन आसीबो? तो 1 minus cos theta by एपटू आसिले 2 sin square theta by 2 is equal to 1 minus cos theta. That is 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. It is in the 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. 1 minus cos theta equal to 2 sin square theta by 2, or sin square theta by 2 is equal to 1 minus cos 2 theta, 1 minus cos theta by 2. Sin square theta by 2 equal to 1 minus cos theta. देखो थीटा बाई 2 थिले थीटा होची cos बाई प्लस होबो sin बाई माइनस होबो sin बाई माइनस होबो. तो sin square theta by 2 equal to 1 minus cos theta by 2, and cos square theta by 2 is equal to 1 plus cos theta by 2. This is the semi angle formula, half angle formula of cos theta by 2. This is the half angle formula of sin theta by 2, half angle formula of sin theta. Okay, this is the very important formula. Cos square theta by 2, 1 plus cos theta by 2, sin square theta by 2 equal to 1 minus cos theta by 2. Okay, next tan theta by 2, tan theta is equal to tan 2 into theta by 2 using formula tan 2a. So this is equal to 2 tan a by 1 minus tan square theta by 2. So tan theta is equal to 2 tan theta by 2 by 1 minus tan square theta by 2. ये सब जगह जो फॉर्मूला ना ये थीटा by 2 स्टाइल लो तो सेमी हाफ एंगल फॉर्मूला ना कि थीटा by 2 रो फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ थीटा by 2. Okay, next we do another some multiple angle, that is the theta by 3 in terms of theta by 3. Next, sin theta equal to, here we express theta equal to 3 into theta by 3. सेठी जदि आमे थीटा लागू 2 into theta by 2 लिखिथिले एठी सिंधी थीटा लागू आमे लिखि परिया sin 3 into theta by 3. Okay, if we express theta equal to 3 into theta by 3, then this is of the form sin 3a, and you know the formula sin 3a equal to 3 sin a minus 4 sin qa. So here a is equal to theta by 3, 3 sin a means theta by 3 minus 4 sin q theta by 3, using the formula sin 3a, 3 sin a minus 4 sin qa. Okay, similarly cos theta, so cos theta you have to write cos theta into 3 by 3, theta into 3 into theta by 3, cos 3a. So this is cos 3a, 4 cos qa, 4 cos qa, a means theta by 3, 4 cos qa minus 3 cos a, 3 cos a means theta by 3, like that tan theta. So tan theta is equal to tan 3 into theta by 3, use the formula tan 3a, 3 tan a, 3 tan a minus tan qa by 1 minus 3 tan square a. Similarly cot theta को theta by 3 स्टाइल में लिख परिया. So this is equal to cot 3 into theta by 3, use the formula cot 3a. तो cot qa
cot QA minus 3 cot A minus 3 cot A means theta by 3. तो cot QA minus 3 cot A by 3 cot square A minus 1. Okay, so cot 3A means कौन cot QA minus 3 cot A by 3 cot square A minus 1. But here A, substitute A in place of A is equal to theta by 3. Okay, so these are all are the formula of some multiple angle in terms of theta by 3. Okay, next we go to another relation. देखो कौन कहली जेम तुम कहल 1 plus cos theta होची 2 cos square theta by 2, 1 minus cos theta है 2 sin square theta by 2. मन रख ये प्लस थिले एटा cos रे पड़ियो, एटा माइनस थिले एटा sin आसीबो, थीटा थिले तमरो theta by 2 हबो बा आमे एटा को एंगल लिखि परिया cos square theta by 2 equal to 1 plus cos square theta by 2 equal what 1 plus cos theta by 2. एटा हम लिखि परिया जे sin square theta by 2 is equal to 1 minus cos theta by 2. मन रख ए दिरा को कन्वर्सल फॉर्मूलाटा कौन. अच्छा, सिमिलरली आम एटा को कौन लिखि परिया कहलो 1 plus sin theta जदि 1 plus cos theta सेमदी हैला 2 cos square theta by 2 1 plus sin theta कौन हबो. मन रख 1 plus sin theta को तुम एटा को theta by 2 स्टाइल लिखले कौन sin theta रो theta by 2 स्टाइल ला कौन कहलो 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. 1 दा को इन टर्म ऑफ sin और cos रे कन्वर्ट करियो. You know the formula of 1 is sin square theta plus cos square theta. किंतु एडी थीटा जगह एडी थीटा by 2 रहिबो. sin theta रे कोन लिखा हबो 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. तेणु आमे 1 जगह लिखिबा cos square theta by 2 plus sin square theta by 2. प्रथमे cos टा लिखियो तापरे sin टा लिखियो. तो दिस इज इक्वल टू cos square theta by 2 plus sin square theta by 2 plus 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. Okay, so one जगह हम लिखले cos square theta by 2 plus sin square theta by 2, sin theta जगह 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, and this is the formula a plus b रो whole square. So this is cos theta by 2 plus sin theta by 2 रो whole square. Okay, so root of 1 plus sin theta, this is root of 1 plus this one, and this one is equal to what? This is cos theta by 2 plus sin theta by 2. Square root cancel. So in generally root over 1 plus sin theta is equal to cos theta by 2 plus sin theta by 2. Similarly 1 minus sin theta कौन होगा ना. This is cos theta by 2. एटा प्लस थिले एटा प्लस रहबो, एटा माइनस थिले एटा मझिरा माइनस हबो. तो माइनस sin theta by 2 रो होल स्क्वायर बा जदि हम स्क्वायर रूट देबा स्क्वायर रूट कैंसिल हबो. This is the cos theta by 2 minus sin theta by 2. Okay, अच्छा एडी हमें एबे पाइबा कोन देखिलो 1 plus tan theta by 1 minus tan theta. तो 1 plus tan theta ता पूर्व आ गोटे कहूची कोन ना 1 plus cos theta by sin theta. अच्छा 1 plus cos theta by sin theta कले कोन हम कहलो 1 plus cos theta फार्मूला पके दियो. 1 plus cos theta कौन ना 2 cos square theta by 2. 2 cos square theta by 2 एडी sin theta रो आसीबो 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. 2 to cancel, तो cos square को cos टा कटला और हला cos by sin. This is equal to cot theta by 2. So we will get another formula cot theta by 2 equal to 1 plus cos theta by sin theta. Similarly 1 minus cos theta by sin theta. So here we get another relation 1 minus cos theta formula pako. This is the 2 sin square theta by 2 sin theta ro 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. 2 to cancel, sin square to sin ketla edalla sin by cos. This is equal to tan theta by 2. So this is tan theta by 2. So tan theta by 2 equal to, that is tan theta by 2. This is also very important formula.
tan theta by 2 equal to 1 minus cos theta by sin theta. এটা theta by 2 থিলে theta হচ্ছে tan থিলে ফার্স্টটা minus 1 minus cos theta by sin theta और cot theta by 2 equal to 1 plus cos theta by sin theta. ओके सब जगह गोटे गोटे फॉर्मूला पिले फॉर्मूला केमती डेरिवेशन होची देखो. नेक्स्ट वी गो टू अनदर रिलेशन 1 plus tan theta by 1 minus tan theta. So what is its formula? 1 plus tan theta. 1 means you have to write 10 pi by 4. 10 pi by 4 plus tan theta by 1 minus एडी किसी ना 1 अच्छी तो 1 means हम लिखी परिया 10 pi by 4 into tan theta. So 10a plus 10b by 1 minus 10 into 10b, and this is the formula for tan of a plus b. So this is the pi by 4 plus theta. So 1 plus tan theta by 1 minus tan theta कोई बात जहाँ tan of pi by 4 plus theta कोई बात था. Similarly 1 minus tan theta by 1 plus tan theta. ऊपरटा जदि माइनस अच्छी तलटा प्लस हम. सो यार फॉर्मूला आसो tan of pi by 4 minus theta. जदि इटा theta by 2 थियो इ मीन मन कर tan theta by 2 by 1 minus tan theta by 2 थियो माने theta by 2 हम. ऊपर प्लस अच्छी माने ऊपर प्लस रहिबो tan of pi by 4 plus theta by 2 हम. मन रहिला एमदी हम पिले ऊपर प्लस थिले एटा प्लस हम ऊपर माइनस थिले एटा माइनस हम. तो 1 plus tan theta by 1 plus tan theta होची tan of pi by 4 minus theta और एटा theta बदले theta by 2 थिले एटा को theta by 2 लिखियो. बुझला कि अच्छा. नेक्स्ट वी गो टू another formula also. So this one is देखो cos theta by 1 plus sin theta और 1 plus sin theta by cos theta. तो 1 plus sin theta by cos theta कौन हम कहलो जिंदगी में 1 plus sin theta फॉर्मूला लिखले जे cos theta by 2 plus sin theta by 2 whole square. This is the cos theta by 2 plus sin theta by 2 whole square. एडी cos theta रो theta by 2 स्टाइल लिखो. This is the cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. देखो सब मल्टीपल एंगल रु हमें केते फॉर्मूला पाउचे दैट इज इंपोर्टेंट. अच्छा एडी कोन पाइले cos theta by 2 plus sin theta by 2 रो होल स्क्वायर. एडी कोन अछि a स्क्वायर minus b स्क्वायर पके दियो फॉर्मूलाटा a plus b cos theta by 2 plus sin theta by 2 into cos theta by 2 minus sin theta by 2. ओके तो एटा स्क्वायर को एटा कैंसिल कर लिमु. ऊपर cos plus sin रहिला तळे cos minus sin रहिला पेले. अच्छा ऊपर cos plus sin तळे cos minus sin अछि माने हम एडी कोन करिया जानछ ना मो cos theta by 2 रे डिवाइड कर देबी इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके so this is equal to divide cos theta by 2. देखो how to get a new expression from using this sum multiple angle formula. तो cos theta by 2 डिवाइड करो तो this is equal to cos theta by 2 by cos theta by 2 plus sin theta by 2 by cos theta by 2 whole by cos theta by 2 by cos theta by 2 plus minus sin theta by 2 by cos theta by 2. तो cos cancel है cos cancel है कौन रही लाइटा ना 1 plus tan theta by 2 1 plus tan theta by 2 by 1 minus tan theta by 2. तो 1 plus tan theta by 2 by 1 minus tan theta by 2 is equal to tan of pi by 4 plus theta by 2. This is the tan of pi by 4 plus theta by 2. So 1 plus sin theta by cos theta is equal to we will get tan of pi by 4 plus theta by 2. Similarly, जदि था 1 minus sin theta by cos theta आस्ता
सेम स्टाइल रे तो कौन करथा तो ये ऊपर माइनस तले प्लस रहिबो तो ऊपर माइनस तले प्लस रहिबो बोले इटा आसीबो tan of pi by 4 minus theta by 2 tan of pi by 4 minus theta by 2 ओके बा आमे जदि लिखि दांते cos theta by 1 plus sin theta cos theta by 1 plus sin theta लिखले भी सेम प्रकार तमे करथांतो हैला अच्छा so this is the how to express okay in the simplest form of theta by 2 form. Next we do some other property that is so 1 plus sin 2 theta equal to how to express 1 plus sin 2 theta equal to so you know sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta but here 1 is there so we express 1 equal to sin square theta plus cos square theta and it is sin 2 theta जगह हमें 2 sin theta into cos theta लिखिया so एंगल कौन अच्छे theta अच्छी तेणु 1 जगह हम लिखिबा cos square theta plus sin square theta or you can write also sin square theta plus cos square theta किंतु बेटर हमें सब बोले फास्ट cos टा लिखिया प्रेफरेंस देबा तो this is equal to 2 sin theta into cos theta and this is known as cos theta plus sin theta ro whole square. So 1 plus sin 2 theta equal to sin theta plus cos theta ro whole square or cos theta plus sin theta ro whole square and 1 minus sin 2 theta. So 1 minus sin 2 theta is equal to cos theta minus sin theta ro whole square. Okay. Similarly, you have to write 1 plus cos 2 theta. So 1 plus cos 2 theta equal to what? 2 cos square theta. And 1 minus cos 2 theta, 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. Because theta tile theta by 2 hobo, 2 theta tile tar adha hobo. So 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. Okay. So using this property, you have to prove some things. So prove that, okay, so prove that one question, prove that 1 plus sin 2 theta minus cos 2 theta whole by 1 plus sin 2 theta plus cos 2 theta equal to tan theta equal to tan theta. देख लो एटा केमजी प्रूव करिया हमें एटा 1 plus sin 2 theta minus cos 2 theta अछि तले 1 plus sin 2 theta plus cos 2 theta अछि हमें डायरेक्ट 1 plus sin 2 theta फार्मूला पकेबा ना 1 minus cos 2 theta फार्मूला पकेबा कोडा हमें बेटर कोडा कहलो ए फार्मूला पकेलो ना 1 से तो cos ता रखिले फार्मूला बेटर हो 1 से तो cos रखियो मन रखो सुविधा हो सो प्रूफ LHS we take the LHS part LHS 1 plus sin 2 theta जो अच्छे हमने बा 1 minus cos 2 theta plus sin 2 theta whole by 1 plus cos 2 theta plus sin 2 theta. So this is equal to AD 1 minus cos 2 theta bracket दे देबा 1 plus cos 2 theta bracket देबा देखो 1 plus cos 2 theta फार्मूला कौन ना this is equal to 2 cos square theta और sin 2 theta रो सेमी एंगल फार्मूला में पकाए सरे sin 2 theta मल्टीपल एंगल फार्मूला this is the 2 sin theta into cos theta whole by 1 plus cos 2 theta फार्मूला पके दे सॉरी 1 minus cos 2 theta कौन sin डायो माइनस तले sin this is the 2 sin square theta 2 sin square theta plus तले cos राशिबो this is the 2 cos square theta plus sin 2 theta द 2 sin theta into cos theta और न्यूमरेटर रो sin टा कॉमन नहीं जो तो 2 sin theta कॉमन ले sin theta plus cos theta by 2 cos theta कॉमन cos theta plus sin theta कहीं 2 cos theta कॉमन ले तो sin theta plus cos को sin plus cos cancel 2 cancel so this is equal to tan theta. So this is equal to tan theta. Next
we do another question. Okay, so this is equal to prove that root of hair number 2. Prove that root of hair 2 plus root of hair 2 plus 2 cos 4 theta. तो रूट ऑफ हेयर 2 प्लस रूट ऑफ हेयर 2 प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा 2 cos थीटा. ओके, सो एटा केमती प्रूव करिया पिले सिमदी हम एलएचएस पार्ट नेबा. तो रूट ऑफ हेयर 2 प्लस रूट ऑफ हेयर 2 प्लस 2 cos 4 थीटा. सो दिस इज इक्वल टू ना रूट अंडर कौन अच्छे देख फास्ट रूट टा नब रूट अंडर यहाँ कौन अच्छी 2 प्लस 2 cos 4 थीटा अच्छी ना भीतर रूट आड़ू फास्ट सिंप्लीफाई करी आण. तो ये आम 2 कमन काढ़ा. तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4 थीटा. यू नो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा. और 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू कौन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. थीटा थिले थीटा बाई 2 हम 2 थीटा थिले थीटा होची प्लस थिले cos पड़ची माइनस थिले sin पड़ची. सो एट फॉर्मूला अनुसार हम कौन हम दिस इज इक्वल टू देख रूट ऑफ हेयर 2 प्लस ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा थिले थीटा बाई 2 तो 4 थीटा थिले 4 थीटा बाई 2. तो दिस इज इक्वल टू 2 थीटा 4 थीटा बाई 2 माने 2 थीटा. तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ हेयर 2 प्लस रूट ऑफ हेयर कौन होची 4 ना कि. तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4 थीटा फॉर्मूला कौन 2 cos स्क्वायर थीटा 2 थीटा ना कि 2 cos स्क्वायर 2 थीटा हम. सो दिस इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर 2 थीटा. तो 4 cos स्क्वायर 2 थीटा रूट माने कौन हम 2 cos 2 थीटा. तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos 2 थीटा. देन आउथर हमें 2 टा कॉमन नेबा. तो 2 कॉमन ले 1 प्लस cos 2 थीटा हम. अच्छा, सो दिस इज इक्वल टू 2 एट फॉर्मूला पके दियो 1 प्लस cos 2 थीटा रो 2 cos स्क्वायर थीटा हम. दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा अछि 2 थीटा रथा केते थीटा. तो दिस इज द 2 cos स्क्वायर थीटा. And this is equal to 4 cos square theta है. तो 4 cos square theta is equal to this is equal to 2 cos theta. So this one is 2 cos theta and this is equal to RHS part. Okay. So this is equal to 2 cos theta. This is equal to 2 cos theta. Okay. Next we do another problem. So prove that cos 4x equal to 1 minus 8 sin square x into cos square x. फास्ट आम प्रूव करिया पिले देखो 5टा प्रॉब्लम दिया हिची. एडी एक नंबर प्रॉब्लम आम करबा. तो हाउ टू प्रूव cos 4x equal to 1 minus 8 sin square x. तो प्रूफ ऑफ 1. अच्छा कहलो आसी केमती करबा एलएचएस आम तो नेबा. तो एलएचएस नेले कोन करिया ता cos 4x. तो ये साइन अच्छे cos अच्छे cos 4x आम कौन लिखिपर कहल दिस इज इक्वल टू cos कौन जमती भी लिखिपर. तो बेटर कौन हम cos 2 into 2x लिखि दियो. तो cos 2 एर फॉर्मूला पके दियो. cos 2 एर मु sin थाई फॉर्मूला पके देबी काहे साइन अच्छी ना. तो cos 2 एर गुड़ाए फॉर्मूला आसी तुम 4x टाकू x plus 3x कले पारिबो ना नहीं बा 2 into 2x करी जो फॉर्मूला पके पारिबो. हमें कौन पके साइन थाई फॉर्मूला पके दी. दिस इज इक्वल काई ना 1 अच्छे ना. तो दिस इज 1 minus 2 sin square x cos 2a. दिस द 1 minus 2 sin square a माने कौन 2x है. तो दिस इज 1 minus 2 into sin square 2x means कौन sin 2x whole square. So this is equal to 2 sin x into cos x whole square. तो 1 minus 2 yes you 4 sin square x into cos square x and this is equal to 1 minus 8 sin square x into cos square x. Okay. Next number 2. तो proof of 2 कौन अच्छी cos 6x अच्छी
तो 4x टा 6x है। अच्छा 6x आम कौन करिया पिले कहीं कहल 2 × 3x करिया ना 3 × 2x करिया कहल बेटर हम 3 × 2x कर दियो कहीं 6x अच्छी ना तो cos 3a तो cos 3a फॉर्मूला पके दियो सो यू नो cos 3a this is the one formula 4 cos qa minus 3 cos a so this is 4 cos qa a means 2x 4 cos q 2x 4 cos qa okay minus 3 cos a minus 3 cos a means 2x पिले cos 3 है 4 cos qa minus 3 cos a सब जगह एक्स रे कन्वर्ट करिया पड़ियो फिर एडी cos देखे सब जगह cos अछि ना एडी cos 2x रे फॉर्मूला पके दियो cos 2x रो cos साइड फॉर्मूला पकेबा तो 4 * केमिन जानियो देखो एडी cos 2x रा सब जगह cos रे अछि तनो हमें सब जगह cos 2x रो cos साइड फॉर्मूला पकेया cos 2x रो फॉर्मूला कोन होता है कहलो 2 cos * x - 1 sin साइड पकेयो एडी फॉर्मूला दिस आर 2 cos * x - 1 रो क्यू होला cos 2x बदले मु पकेलीडा -3 * cos 2x जार पकेबी 2 cos * x - 1 तो एडी पके दियो aq - bq so this is 4 * you know aq - bq using a plus b whole cube aq माने केते हला दिस 8 6 बार cos x aq plus bq minus 1 रो q एडा को प्लस आगे भाबो a plus b प्लस हो b डा केते -1 बोली भाबो तो aq plus bq -1 रो q केते -1 plus 3a² b plus 3a² b b बेला केते -1 into एति गेला हला a² माने कोन लाई plus 3a² माने केते a² माने केते होबा 4 into cos 4x into -1 हला ना देखो फर्स्ट aq plus bq plus 3a² माने 4 cos 4x 3a² b माने -1 तापटा कोन हो प्लस 3a b² माने -1 द स्क्वायर सो एतिके असला मु कोन कहली जानछि ना जो 2 cos x - 1 द की होछि मु सेडा को -1 दा को प्लस और -1 भाबिली a plus b रो होल क्यूब aq plus bq plus 3a² b plus 3ab² ओके तो माइनस टा मल्टीप्लाई करले एटा केते होछि 6 तो 6 -6 4th cos x सॉरी -3 2 6 cos * x ये +3 तो आपको मल्टीप्लाई करले केते होछि एटा दिस इज द 4 * 8 32 6 बार cos x ये आसला -4 ओके ये कहते प्लस इंटू माइनस अगर 4 अच्छी तो प्लस इंटू माइनस है तो माइनस कौन हम 3 4 जा 12 इंटू 4 48 48 4th बार cos x नहीं हाँ ये आसो केते ये कहते -1 स्क्वायर +1 3 2 जा 6 6 into 4 24 plus 24 cos * x एडा -6 cos * x plus 3 so this is equal to 32 6th बार cos x minus 48 4th बार cos x plus 24 minus 6 so this is equal to 18 cos * x plus 3 minus 4 this is equal to -1 so this is equal to 32 6 बार cos x minus 48 4 बार cos x plus 18 cos * x -1 ओके तेणु cos 6x टा तुम कौन लिखल cos 3 into 2x को फॉर्मूला पकेब दैट इज वेरी इंपोर्टेंट पिले जेहेतु आमको प्रमाण करार अच्छे सब जगह cos अच्छी तेणु cos 2x cos साइड फॉर्मूला पकेब कहीं गोटे एक्सप्रेशन गुड़ाए फॉर्मूला अच्छी तुम को फॉर्मूला पकेब दैट इज वेरी इंपोर्टेंट आ को फॉर्मूला पकेले कैलकुलेशन इजी हो दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट नेक्स्ट थर्ड नंबर टा देखो tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x minus 4 tan qx by 1 minus 6 tan square x plus tan 4th x एटा निजे करि परियो नै
कर परियो ना कहीं केमती करियो कहीं कहलो tan 4x टा तुम कौन लिखियो tan 2 into 2x लिखि दबो हेले tan 2 रे फार्मूला पकेबो 2 tan a by 1 minus tan square हेले a माने कौन 2x ए जो tan 2x हला से अगेन आउथरे tan 2x रे फार्मूला पकेबो एमदी पकेरी सिंपलीफाई करियो ना ठीक है एटा होमवर्क तुम पाई रहिला आ 4 नंबर टा भी आमे एम द्वारा गोटे गणित करथिले जे रूट भीतर रूट आरु फास्ट फिटेबो बेले लास्ट रूट टा केते अछि रूट ओवर 2 + 2 cos 8 थीटा अछि ना सेठी 2 टा कॉमन नबो 1 + cos 8 थीटा 1 + cos 8 थीटा फॉर्मूला पकेबो 2 cos स्क्वायर 4 थीटा हबो नहीं अच्छा सेम दी पके नबो हैला नेक्स्ट एटा भी निजे करियो 4 नंबर टा 5 नंबर टा केमती करियो कहीं कहलो cot x अछि into cot 2x minus cot 3x into cot 2x minus cot 3x into cot x is equal 1 this one is easy also acha how to prove this one first you have to write 2x plus x is equal to 3x or 3x is equal to 2x plus x taking cot on both side cot andala par cot formula पकेबो cot formula पकेला पर तमे आंसर टा देखिरे एडजस्टमेंट कर दबो हैला एमदी निजे करिवो पिले 3 4 5 ए तीनटा को तुम पाई होमवर्क रहिला नेक्स्ट आमे अन्य प्रॉब्लम करिबा ठीक अछि सो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 22 हाफ डिग्री cos 22 हाफ डिग्री tan 22 हाफ डिग्री cot 22 हाफ डिग्री tan 7 हाफ डिग्री cot 37 हाफ डिग्री ओके देन cos pi by 16 sin pi by 32 ये सब जगह सेमी एंगल फार्मूला थीटा बाय 2 स्टाइल अछि यार फार्मूला में पकेबा ना नहीं अच्छा यार वैल्यू हमें केमदी बाहर करियो देखो दिस वन इज वेरी इंपोर्टेंट आल्सो आंसर 1 देखो sin 22 हाफ डिग्री so this is equal to sin what 45 by 2 degree 22 into half means 22 2 ja 44 plus 1 45 by 2 so we know sin square theta by 2 sin square theta by 2 is equal to 1 minus cos theta by 2 8 theta by 2 thile theta bata double hobo and sin theta by 2 is equal to root of 1 minus cos theta by 2 cos theta by 2 is equal to root of 1 plus cos theta by 2 अच्छा ये पके दियो this is the sin 45 degree by 2 is equal to that means sin theta by 2 तो root of 1 minus cos theta so theta by 2 thile theta होची ना 45 by 2 डिग्री कोन हबो 45 डिग्री हबो by 2 हबो ओके so this is equal to 1 minus cos 45 degree equal to 1 by root 2 by 2 but you know 1 by root 2 so 1 by root 2 माने हमें कोन रेशनलाइजेशन कर दियो these are root 2 by 2 so this is equal to root of 1 minus root 2 by 2 by 2 तो याको सिंपलीफाई करले कोन होची कहलो ऊपर एलसीएम आसीबो these are 2 minus root 2 by 2 so this is by 4 so this is equal to half into root of 2 minus root 2 तो half into okay 2 minus root 2 by 2 or this is equal to root over 2 minus root 2 by 2 okay next cos 22 half degree this is also same use way so this is equal to cos एड़ा भी 45 डिग्री by 2 कर दियो तो cos theta by 2 रो फार्मूला पके दियो तो this is equal to root of 1 plus cos theta by 2 and this is equal to this one is equal to cos 45 means 1 by root 2 by 2 but 1 by root 2 is equal to 2 by root 2 एटा कौन लिखियो 2 by root 2 नहीं कि so this is equal to root 2 by 2 root over 1 plus एटा लिखि दियो root 2 by 2 so this is equal to 2 plus root 2 by 2 by 4 हला so this is equal to root of 2 plus root 2 by 2 काई root 4 माने 2 so एडा होची तमरो cos 22 half degree is equal to root over 2 plus root 2 by 2 and sin 22 half degree equal to root over 2 minus root 2 by 2 similarly तब एटी बाहर करो tan 22 half degree देखो tan 22 half degree so this is equal to tan 45
tan 45 by 2. So you know tan theta by 2. Tan theta by 2 formula कौन कहते हैं 1 minus cos theta by sin theta. मन अच्छी ना एबे करथिले परा tan theta by 2 is equal to 1 minus cos theta by sin theta. Cos theta by 2 is equal to 1 plus cos theta by sin theta. ए दिरा फॉर्मूला मन रखो. So this is equal to tan 45 degree. Tan 45 degree by 2 is equal to tan theta by 2 equal to 1 minus cos theta. So 1 minus cos 45 degree by sin 45 degree. 1 minus cos 45 by 1 by root 2. So this is equal to root 2 minus 1 by root 2 cancel hela. Okay. And cot 45 degree. Cot 22 half degree is equal to cot 22 half degree माने कौन होगा pi by 4 sorry pi by 8 cot pi by 8 कहीं 45 माने कैसे pi by 4 by 2 pi by 8 okay तो cot pi by 8 तो cot pi by 8 is equal to एरिया में फॉर्मूला पकेगा इडा तो 1 plus cos 45 degree by sin 45 degree बोले कौन होगा 1 plus 1 by root 2 by 1 by root 2 so this is equal to root 2 plus 1 so cos pi by 8 equal to root 2 plus 1 and tan pi by 8 this is the tan pi by 8 in radian लिख ले tan pi by 8 is equal to root 2 minus 1 so in tan 7 half degree बाहर करियो तमे अच्छा tan 7 half केमती बाहर करियो कहलो so tan 7 half degree is equal to tan 7 half degree next you have to calculate tan 7 half degree next tan 7 half degree this is also tan of 15 degree by 2 नहीं so tan 7 half degree is equal to tan of 15 degree by 2 you know tan theta by 2 equal to 1 minus cos 15 degree by sin 15 degree because tan theta by 2 is equal to 1 minus cos theta by sin theta theta by 2 थिले theta होची ना अच्छा cos 15 degree लास्ट क्लास में बाहर करथिले जे cos 15 degree is equal to कोन cos 15 degree is equal to केता आसियो √3 plus 1 नहीं कि तो √3 plus 1 by 2 √2 और sin 15 degree is equal to √3 minus 1 by 2 √2 कहीं cos 15 टाइम लिखियो कौन 45 minus 30 cos of a minus b cos a cos b plus sin a sin b तेणु एटा plus √3 plus 1 by 2 √2 आइबो sin 15 टाइम लिखियो तमे 45 minus 30 sin of a minus b फॉर्मूला पकेबो sin a cos b minus cos a sin b पकेले एटा से √3 minus 1 by 2 √2 तो यार वैल्यू पके दियो तो दिस इज इक्वल टू 1 minus √3 plus 1 by 2 √2 by sin 15 हैला √3 minus 1 by 2 √2 तो 2 √2 कैंसिल होइला कॉमन बाहर करले एलसीएम बाहर करले आसियो 2 √2 minus √3 minus 1 by √3 minus 1 आसियो आकु रेशनलाइजेशन कर दियो तो दिस इज इक्वल टू 2 √2 minus √3 minus 1 into √3 plus 1 by √3 minus 1 into √3 plus 1 so एटा को मल्टीप्लाई करले कोन होची 2 √2 को √3 मल्टीप्लाई करले 2 √6 plus 2 √2 minus 3 minus √3 minus √3 हैला नि फर्स्ट 2 √2 को 2 √3 2 √6 हैला plus 2 √2 हैला minus √3 minus √3 minus 3 तापर आसियो minus √3 minus 1 गुणलु minus √3 minus 1 हैला by √3 रो स्क्वायर कहते 3 minus 1 3 minus 1 कहते 2 हैला so this is equal to कोन होची ना 2 √6 minus √3 minus √3 minus 2 √3 ये minus 2 √2 minus 3 minus 1 minus 4 by 2 कर देले कोन होची √6 minus √3 minus √2 minus 2 this is the answer okay similarly cot 37
cot 37 ना कौन लिखियो कहलो cot 37 half degree equal to cot 75 degree by 2 but cot 75 degree by 2 is equal to 1 plus cos 75 degree by sin 75 degree cos 75 degree value पकेबो sin 75 degree value पकेबो पके एमदी रेशनलाइजेशन करी कैलकुलेशन करियो ओके नेक्स्ट वी कैलकुलेट cos pi by 16 अच्छा cos pi by 16 माने कौन माने pi by 8 रो by 2 करियो 22 हाफ रो और आधा डिग्री एमदी 22 हाफ रो और आधा अच्छा cos pi by 16 नाम लिखि परिया दिस इज द cos आको थीटा by 2 स्टाइल लिखले cos pi by 8 by 2 माने cos थीटा by 2 रो फार्मूला पकेबो रूट ऑफ 1 plus cos थीटा by 2 एमदी कल हबो किंतु आमे अन्य उपाय करबा एडा गु कोन करी देखमु cos pi by 16 ना मु लिखबी दिस द cos स्क्वायर pi by 16 रो रूट ऑफ कर दिबी cos pi by 16 इज इक्वल टू cos स्क्वायर pi by 16 by 2 होला पहले फार्मूला पकेबी cos स्क्वायर थीटा अच्छा cos स्क्वायर थीटा by 2 थिले कोन हबो ना दिस इज इक्वल टू 1 plus cos थीटा by 2 थीटा by 2 थिले थीटा हबो आउ थीटा थिले कोन हबो cos स्क्वायर थीटा ना 1 plus cos 2 थीटा by 2 हबो थीटा by 2 थिले थीटा होची थीटा थिले 2 थीटा हबो तार डबल हबो मन रखो सो दिस इज इक्वल टू एटा कोन लिखिबी cos स्क्वायर जो pi by 16 अछि एडी मु लिखि 1 plus cos थीटा माने आर डबल pi by 16 रो द्विगुण केते pi by 16 रो 2 टाइम्स माने कोन है 2 into pi by 16 माने केते आसे pi by 8 तो cos pi by 8 by 2 बुझियो ना थीटा थिले 2 थीटा हबो अच्छा एटा थीटा बोली भाबनो तो 2 थीटा लिखियो 2 into pi by 16 तो pi by 8 हला सो दिस इज इक्वल अगेन आउथरे मैं कोन करी एटा 1 plus ए जो cos pi by 16 ना को लिखियो आउथरे अगेन दिस द cos स्क्वायर pi by 8 रूट पकेबी by 2 देखो छ ना बोला बुझा चेष्टा करो कि लेखा उस एक्सप्रेशन ना तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 plus फिर एटा अगर फॉर्मूला पकेबी cos स्क्वायर थीटा रो 1 plus cos 2 थीटा तो 1 plus cos 2 थीटा 2 into pi by 8 माने कोन हो pi by 4 by 2 एडे पल्ला by 2 होल by 2 अछि ना होल by 2 अछि हले pi by 4 प्लस ला pi by 4 वैल्यू मु जानछि 1 by root 2 pi by 8 pi by 16 रो वैल्यू जान नथली बोली pi by 8 जानली pi by 8 को pi by 4 रे कन्वर्ट करली वी नो pi by 4 cos pi by 4 equal 1 by root 2 बर्तमान तुम 1 by root 2 पके दबाडी सो दिस इज इक्वल टू कौन हला देखो यार वैल्यू पकेले कौन होची द रूट ऑफ 1 plus रूट ऑफ 1 plus cos pi by 4 केते 1 by root 2 by 2 अछि नहीं होल by 2 अछि होल by 2 अछि सो दिस इज इक्वल टू कौन हला ना रूट ऑफ 1 plus भलार देख पिले एटा को 1 by root 2 अछि 1 by root रो तो मु कोन कहितली करियो बोली कोन करियो 1 by root 2 is equal to root 2 by 2 ए लिखियो 1 plus this is equal to root 2 by 2 लिखि दियो by 2 whole by 2 बर्तन रूट अंडर टा को सिंपलीफाई करो रूट ऑफ 1 plus रूट ऑफ कोन करी ना 2 plus root 2 by 2 by 4 हला होल by 2 अछि ना रूट भितरु 4 टा नले कोन हबो 2 हबो तो दिस इज इक्वल टू 1 plus रूट ऑफ 2 plus root 2 by 2 भलार बुझिया चेष्टा कर पले by 2 अछि आको सिंपलीफाई करले कोन हबो ना रूट ऑफ 2 plus root 2 plus root 2 by 2 by 4 रूट आउट बाहर कर दे दिस इज इक्वल टू 2 plus root 2 plus root 2 by 2 whole by 2 एतिकी यार रूट by 2 this is the answer तो cos pi by 16 is equal to root over 2 plus root over 2 plus root 2 by 2 similarly you have to calculate sin pi by 32 तो sin pi by 32 बोल तुम कौन लिखियो ना रूट ओवर sin स्क्वायर pi by 32 फार्मूला पकेबो sin स्क्वायर थीटा by 2 बा sin स्क्वायर थीटा रो रूट ओवर 1 minus cos 2 थीटा माने cos pi by 16 होबो by 2 होबो फिर cos pi by 16 रा को लिखियो फार्मूला पके एम दे लिखि जीवो
है एमती कैलकुलेशन करियो cos sin pi by 16 टा निजे करियो पिले एटा सो आज सो टुडे सेक्शन वी विल डू multiple and so multiple angle ये फॉर्मूला का देखिलो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपोर्टेंट पिले ए फॉर्मूला केबेले भूलियोनी ए फॉर्मूला सब जाक इंपोर्टेंट फॉर्मूला आज डिस्कशन कराला सो इन द नेक्स्ट क्लास वी डू some other property of the trigonometrical ratio. Thank you.